over a long period of time in any economy, what we see some paradoxes in economic development, particularly in developing economies. On the one hand, a real per capita income is increasing, but on the other hand, there is no reduction in poverty. Unemployment is also increasing during the process of increasing a real GDP or a real per capita income. No reduction in economic inequalities. So, economic development is also associated with social development, and we can't separate economic development from social development. So in today's lecture, our guest, Dr. Parkash, who is PhD from London School of Economics, and it is a matter of proud for our department and our institution to have such a great economist for today's lecture. Dr. Parkash, during his all higher education, received renowned scholarships like Cargill Fellowship during his Bachelor of Science in Economics, Allison and Tim Frost Scholarship during his Master in Economics, and Gujri Fellowship during his PhD from London School of Economics. So बहुत ही renowned economist, senior economist ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ USA ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ HOD ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਅਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ HOD ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ। ਮੈਡਮ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ। Good morning, everyone. I, on behalf of the Department of Economics, extend a very warm welcome to our esteemed speaker, Dr. Parkash Singh, and Director Principal Sir, faculty members, and students of this guest lecture on socio-economic issues in economic development. Dr. Parkash Singh needs no introduction. A doctorate in economics from London School of Economics, he has taught at Amherst College in United States, America for 7 years. He has published his research findings in international journals and has presented his research papers at renowned universities across the globe. He has been given research grants from various funding organizations. At present, he is senior economist and manager in Amazon Seattle at USA. Dr. Parkash, we are grateful to you for accepting our invitation to be the resource person for today's webinar and sparing your valuable time. I am sure our students will gratefully benefit from your vast knowledge and experience. I welcome you again. Thank you. I hand over to Dr. Rikpa.
Thank you, ma'am. Students, Dr. Parkash have 20 peer-reviewed publications in top economic journals, including Journal of Economic Development, Journal of Health Economics, Journal of Economic Behavior and Organizations, etc. So today, Dr. will discuss socio-economic issues with you. There are many socio-economic issues during the process of economic development, and these factors have negative influence on individual economic activity. These socio-economic factors like unemployment, overpopulation, lack of education, corruption, cultural and religious discrimination. Among these socio-economic issues, poverty is the main issue. Poverty is the violation of human dignity. So far poverty will not decrease. We can't say that any economy is developing. So such socio-economic issues will be discussed by Dr. Parkash, and I request Dr. Parkash to start lecture. So thank you. Thank you, Dr. Jagpal Singh. Thank you, Professor Navjeet Kaur. So thank you for having me here. I'm grateful and honored to be giving this talk to all of you. But I'd like this. Can you all hear me okay? Can someone just tell me if you can hear me okay? Can you hear me clearly? No problem, you are audible, sir. Okay, great. Thank you. So what I'll do is I'll divide my talk, which will take around 30 minutes, into two parts. The first part will be more macro. So I'll give you a round of how three major economies have fared in the last 200 years. And then I'm going to take a more micro approach to trying to understand one particular problem in economic development, which is child malnutrition. And I mean, I typically speak in English, but मैं which Punjabi te Hindi which we kal kar sakta. I would request all of you to keep notes while I'm speaking. कि जब भी तुहानू question या कोई भी clarification दी लोड़ है, then I can come back to it later. मैं बाद विच उस question पे आ जावांगा ते तुहाडा जे तुसी note करोगे तां it'll be easier for you to ask me a question at the end of the lecture. So we'll keep the last 15 minutes or so for any questions that you may have for me. So we can get started now. So let me turn on the sharing mode. Let's see. Let's get started here. Okay. Let's see. Share. Okay. All right. So Dr. Jagpal Singh just mentioned that poverty is the main issue in development economics, and as of today, as of this year, over 10% of the population lives below the poverty line, which is currently $2 a day. A large fraction of this population, 41% of the population in sub-Saharan Africa is below the poverty line. 22% of people in India live below the poverty line. But we have made rapid progress on reducing poverty in India and around the world. So I want to give you a brief tour of how we have fared as India, but also more generally how developing countries have fared in the last 200 years. So these are three birds representing three different countries. Of course, you can recognize the peacock, which is the national bird of India. The bird on top is the red-crowned crane, and that's the national bird of China.
and the bird at the bottom right is the bald eagle, which is the national bird for America. So what I'm going to do is I'm going to represent each of these birds or each of these countries by these birds and walk you through what has happened in the last 200 years in these countries, in these three countries. So we are going to ignore all the other countries for now, just for simplicity. And this is and on the x-axis of this graph, I hope you can see this graph. So on the x-axis of this graph is income, and this is GDP per person adjusted for purchasing power parity at 2011 prices. So so in the year 1800, India is at an income level of about $863. So right now our living standards are about 10 times higher than the living standard in the year 1800. China is actually poorer than India. It is about 30, well, not 30%, but maybe like 10% or so poorer than India in 1800. And it has a life expectancy of 32 years. India has a life expectancy of 25 and a half years in the year 1800. This is America. America has a life expectancy of 39 years in 1800 and an income level of close to $2,000. So US is already about 2.5 times richer than India about 200 years ago. Okay, so this is where we are starting from, the year 1800, because this is where most of the data starts getting collected for GDP and for life expectancy. And here I'm just going to be using GDP per capita or income as the best proxy for economic development. तो ये एक symbol है economic development का, ये इसमें आप और भी यूज कर सकते हैं indicators, but this is the most commonly used indicator, तो इसलिए मैं income यूज कर रहा हूँ. And on the y-axis, health के आपके और indicators हो सकते हैं, जैसे कि child malnutrition, child mortality. You can also have babies per woman. You can have population growth, etc. So इसमें हम life expectancy use कर रहे हैं in the number of years. Okay, so life expectancy is defined as the average number of years a newborn would live if current mortality patterns were to stay the same. So India में उस वक्त 25.5 years is the average life expectancy. इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान 25 साल ही जिंदा रहेगा after they are born. इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे 1800 में चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ही ज्यादा हाई थी. So a large fraction of the population did not survive till the age of 5 or even till the age of 1, and that reduced the life expectancy. तो अगर आप 12-14 साल तक जी जाते थे तो ठीक है, तो 60-70 तक जी जाते थे, तो वो average करके 25 आ जाता है, because a lot of people are dying before the age of 5, and then a lot of people are surviving till the age of 50 or 60. So the average is around 25. So this is where we're starting off at in the year 1800. So now I'm going to play you this sort of movie almost in relatively fast fashion to see what happens over time. So ये जो आप देख रहे हैं trailing tails, ये उस साल का क्या हुआ, उस साल में क्या हुआ. तो आप देख रहे हैं कि अभी 1850 तक 1850, so अब हम 60 साल 1860 आ गया, so 60 साल आगे आ गए हैं इस पीरियड में. अभी इंडिया की GDP per capita थोड़ी कम हो गई 1800 से. It has gone from 800 something to 750. Life expectancy भी कम हो गई है, 23 years हो गई है 25 and a half से. और इसका मेन रीजन ये था कि इंडिया में फैमिन बढ़े हुए, यूएस में भी 1861 में सिविल वॉर हुई, तो अब आप देखेंगे यूएस में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज यूएस में एक सिविल वॉर हुई जिसमें 820,000 डेथ्स हुई. तो मैं अभी करूंगा तो देखिए आप नीचे गिर रहा है, क्योंकि 820,000 people have died between 1861 and 1865 in America. अमेरिका में कोई
health improvement नहीं हो रही अभी 1880 तक कोई health improvement नहीं होती because उससे पहले vaccines नहीं थी. People were dying of measles, of typhoid, of smallpox, of mosquito-related diseases. So a lot of the progress on the health front is going to start coming in after the year 1880 in the US especially. China और इंडिया अभी बिल्कुल स्टैग्नेंट है, कोई इनकम ग्रोथ नहीं हुई पहले 64 इयर्स में, कोई खास हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं हुई. चाइना में there was a massive famine as well. So actually China had wars. So China and England fought a war in 1860, in the 1860s. This was called the Opium Wars. And so their life expectancy also went down during the time of the war. So anyways, let's keep continuing the movie. And you see here now in 1980 onwards, you start seeing this increase in the life expectancy in America. This is basically because of the vaccines that are coming in US, and they're saving a lot of lives, especially of children who are under the age of 5 years. So ये जो छोटे बच्चे हैं, mothers हैं जो अभी mothers maternal mortality declined, child mortality declined, and अभी ये जो vaccines हैं ये चाइना और इंडिया में नहीं आए. चाइना और इंडिया में हेल्थ इंप्रूवमेंट में अभी थोड़ा टाइम लगता है, 50 साल लगते हैं बिफोर दे स्टार्ट इंप्रूविंग इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सो ऑन. अभी ये वहीं के वहीं बैठे हैं, अभी 100 साल होने को हैं, इनकम वही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उतनी ही है. तो अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट मेन जो इवेंट आता है वो आता है 1900 में. इंडिया में एक बहुत बड़ा फैमिन हुआ था, अब देख सकते हैं. अब 1900 में ये थोड़ा नीचे भी गया, ये देखिए 1900 में नीचे गया, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे गई. तो इसमें काफी बड़ा फैमिन आया इंडिया में. अबाउट 4.5 मिलियन पीपल डाइड इन 1899 टू 1900 का जो फैमिन था इंडिया में. इसके बाद जो मेन पीरियड आएगा वो अब इंडिया की इंडिपेंडेंस होगी. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है 1918 में, तो वो थोड़े आउटलायर्स दिखेंगे आपको बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगेन वेंट डाउन. इनकम ओवरऑल बढ़ रही है, अब अमेरिका में इनकम बढ़ेगी. और वर्ल्ड वॉर ये तो वर्ल्ड वॉर 1 है सच. वर्ल्ड वॉर 1 finished in 1918. World War 2 ended in 1945. So then we keep continuing on this path, and so it's still, we've reached almost independence in India. 1947 आने वाला है, अभी इंडिया उतने पे ही है, अभी 900 है इनकम, and life expectancy is now slightly better. Now it's at 33.9 years. China is 37 years. Life, income is still lower than India, and US is by far is 16 times higher income and much higher, 2 times higher life expectancy. So US और India में काफी बहुत बड़ा gap है by the time India gets independence from England. And now in 1959 to 1961 में Chinese famine आएगा. तो आप देखेंगे चाइना में बहुत बड़ा dip आएगा life expectancy में, because in their great famine they lost 15 to 55 million people. So you see this decline here is happening because of the Chinese famine. India has gained independence now. Obviously now Nehru is the prime minister, and we are having some social development now because we have adopted the USSR Soviet model of social development before economic development. So now we are spending a lot on education and health, and we have started our progress in 1950s, 1960s at a relatively low but positive growth rate of about 2 to 3%, which is called Hindu growth rate. China में अभी कोई growth खास नहीं हुई. China में growth starts after 1978, after the death of Chairman Mao, and when Deng Xiaoping opens up the Chinese economy. Indian growth rates don't increase until Manmohan Singh opens it up in the year 1990,
2 or so. So you will see that now. China's will start growing after 1978. You will see economic progress that China makes, and it's kind of like almost a straight line after that. So starting from 1978 to 2019, you don't see any big drops or increases for China, and likewise for India, and also likewise for US. So the last, about, I would say about 45 years or so have been very good for growth, have been good for life expectancy. And so currently, life expectancy in China is 78 years. Life expectancy in US is 78.6 years. So the life expectancy in China and US has now actually converged. Even though China is, about a third as rich as US, China की जो income है वो $17,000 है. India की about 7,000 hai. So China is still more than 2 times, an average Chinese person is still more than 2 times as rich as the average Indian as of today. But China is also, it has firmly cemented its place in a sort of level 3. मेरे 4 level समझें आप incomes के. अब China US को पकड़ने की दौड़ में है, both in terms of income and लाइफ एक्सपेक्टेंसी में तो पकड़ ही चुका है. और इंडिया अभी 10 साल पीछे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, और यूएस और इंडिया का अगर आप कंपैरिजन करें तो यूएस इज अबाउट 8 times higher in income than India as of today. So this is I just wanted to give you this sort of historical view on 3 major economies and how they have fared in the last 200 years. The growth hasn't been linear, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप स्टार्ट करें एक स्ट्रेट लाइन बना दें, वैसा भी नहीं हुआ. शुरू में थोड़े हिकअप्स आए, वॉर्स हुई, फैमिन्स हुए, तो ये आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ऑल ओवर द प्लेस. बट आफ्टर 1978 for China, and after the 1980s, 1990s in India, we have grown a lot. हमारा ये अच्छा रहा है period relative to previous 100 years, and also in terms of life expectancy. So this is where we are standing right now. India is still considered a low-income country. China is a middle-income country.
अभी नहीं जाना चाहता उस डिटेल में, बट हमने लॉन्ग टर्म में भी इसके इफेक्ट्स देखे कि लॉन्ग टर्म में भी ये सस्टेन होता है कि नहीं, और वो हुआ सस्टेन। तो मैं यही कंक्लूजन में यही कहूंगा कि व्हाट मेक्स फॉर गुड इकोनॉमिक्स, तो इसमें कि गुड इकोनॉमिक्स में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें पहले आ गया रैशनल थिंकिंग, कि आप एम्पिरिकली ऑब्जर्व करें, फैक्ट्स फिगर्स अपने देखें कि क्या सच क्या है, अलग अलग सोर्सेज से देखें, जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे कंसल्ट करें कि क्या क्या है, अपना जाके अपने सर्वेज करें देखने के लिए कि ग्रास रूट रियलिटी क्या है। सेकेंडली, वेयर इज द मार्केट फेलियर, तो इसमें हमने दोनों चीजें कंसिडर करें, डिमांड भी और सप्लाई भी। इस केस में दोनों जगह प्रॉब्लम थी। इट वाजंट अ केस कि सिर्फ मदर्स को अगर आप रेसिपी बुक दे दें तो सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं हुआ। जब हम वर्कर्स को इंसेंटिव्स देते थे तो वर्कर्स जाके फिर मदर्स के साथ बात करते थे। हमने ये डेटा में भी ऑब्जर्व किया, हमने जब इंटरव्यूज किए एंड लाइन पे देखने के लिए कि मदर्स से पूछा कि आए थे कि नहीं वर्कर्स आपसे बात करने, तो जहाँ पे इंसेंटिव्स दिए हुए थे हमने वर्कर्स को, तो वहां पे आती थी मदर्स से बात करने। और जहाँ पे मदर्स के पास रेसिपी बुक होती थी तो वो उनको पॉइंट भी करते थे कि आप ये रेसिपी बनाएं। तो इसमें इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया कि डिमांड साइड नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, और सप्लाई साइड नीड्स टू बी इंसेंटिवाइज्ड। अगर सप्लाई साइड इज नॉट इंसेंटिवाइज्ड, अगर टीचर्स या वर्कर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है काम करने का, तो भी आपका ये असर नहीं आएगा। आप सिर्फ एजुकेशन ऑफ द डिमांड साइड पे असर intervention करेंगे, then also you will not get rid of malnutrition. So you need to have a dual two-pronged framework to make this work. थर्ड थिंग हमने ये देखी कि एक्सपेरिमेंट्स अगर आप यूज करें तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। तो इस रिजल्ट को यूज किया कई गवर्नमेंट्स ने। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये रिजल्ट यूज करके अपने इंसेंटिव्स देने लग गए वो वर्कर्स को, इसी प्रकार के 200 रुपए एंड सो ऑन। तो इसका असर पड़ा बिकॉज पॉलिसी मेकर्स ने देखा इसको, रिजल्ट्स को देखा और इससे लर्न करके अपने चेंजेस करी पॉलिसी में। और इसमें हमने ये भी देखना जरूरी है कि जब हम ऐसे इंसेंटिव्स करें तो उसका कोई अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस ना हो। ये ना हो कि जो वर्कर्स हैं वो बच्चों के पॉकेट्स में पत्थर रख के उनको वे करा रही हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ी। ये भी ना हो कि जो बच्चे थोड़े हेल्दी हैं उनसे खाना लेके जो बच्चे नहीं हेल्दी उनको ही दी जा रही हैं, तो हेल्दी वाले जो हैं वो मैलनरिश्ड हो जाएं। तो इसलिए हमें डिसइंसेंटिव भी रखना पड़ा कि जो अगर कम हो जाए तो माइनस भी करो उसमें से 200। सो इसमें हमें देखना पड़ता है, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंसेंटिव्स भी देखने पड़ते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक उसमें कोई वो नहीं है, कोई एक यू डोंट हैव सिंगल गोल्डन एरो जिसको कहेंगे आप, कि एक चीज से नहीं एड्रेस होती। मल्टीपल फ्रंट्स पे अगर आपको काम करना पड़ता है, कई बार दोनों डिमांड साइड सप्लाई साइड इश्यूज देखने पड़ते हैं। और ये तो हमने सिर्फ मैलन्यूट्रिशन एक चीज कंसिडर कर रही है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो लैंडस्केप है, जो एरिना है जो मैं पढ़ाता था, वो काफी वाइड है। तो उसमें आपका अपार्ट फ्रॉम हेल्थ एजुकेशन आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ, विमेन एम्पावरमेंट, माइक्रो फाइनेंस भी आ जाता है। इसमें जो दो नए टॉपिक्स आजकल काफी अच्छे हॉट चल रहे हैं, लोगों को बड़े पसंद आते हैं, उसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने करप्शन के ऊपर पे बड़ा काम हुआ है आजकल रिसेंटली, देखने के लिए कि करप्शन क्यों होती है और करप्शन का इफेक्ट क्या होता है। और आजकल कॉन्फ्लिक्ट पे भी बड़ा काम हो रहा है। मेरा भी थोड़ा काम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी था पहले। तो कॉन्फ्लिक्ट में ये क्राइम आ जाता है, सिविल वॉर्स आ जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाती है। तो इसका क्या कॉज है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पे भी इकोनॉमिक्स में बहुत काम चल रहा है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर। तो ये जो आई जस्ट एंड विद दिस पिक्चर। तो ये भी एक आंगनवाड़ी के बाहर ही एक तोता था पिंजड़े में। तो मेरे को यही लगा कि मतलब ये दिस इज द स्टोरी ऑफ द नेशन। अगर इंडिया को फ्री करना है आपने पॉवर्टी से, इलिटरेसी से, मैलन्यूट्रिशन से, तो उसके लिए आपको
इस बर्ड को इक्विप करना पड़ेगा विद द राइट स्किल सेट, उसको प्रॉपर हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, एंड देन हमें उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि बाहर जाके आपको क्या मिलेगा. और ओनली विद द स्किल सेट, ओनली विद द एजुकेशन, द हेल्थ, मल्टीपल फ्रंट्स पे काम होगा तो ही ये बर्ड बाहर जाने के लिए रेडी होगा. सिर्फ एक चीज करने से कई बार नहीं बात बनेगी. तो ये मेरे को this is one of the things कि there are many complementarities in development, and how we exploit those complementarities. हम कैसे कई चीजों को मिला के अगर एक चीज पैकेज करें तो ही असर पड़ेगा. इस जो ये अभी हमारा कोविड चल रहा है उसमें भी आप देखेंगे सिर्फ आप हाथ धोने से नहीं कोविड रुक सकता, उसमें भी आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ेंगी तो ही कोविड रुकेगा. You have to wear masks, you have to wash your hands, you have to take vaccines. तो इसमें भी मल्टीपल कॉम्प्लीमेंटैरिटीज आ जाती हैं. अगर आप सिर्फ एक चीज करेंगे तो उसका असर कोई खास नहीं पड़ता. तो I'll just stop here and open it up for any questions from your side. Sorry, you go back. Thank you, Daksan. Thank you very much for a very good talk on economic development. You compared the growth process of India, China, and USA over the last 200 years with good examples. You shared your study on India. So thank you very much. Now students, any student is having any question can ask, or you may write in the chat box. Now this is the open session for students. Any students can ask any question, or he may write in the chat box. Yeah, feel free to pop up on video and ask any question. I think you are muted, Dr. Jackpal. I think you are muted. I think आप muted हैं, Dr. Jackpal जी. Thank you, Daksan. Thank you. Sorry, sir, we have facing a network problem here, and I think our students are very much satisfied from your lecture. So thank you very much. Now I invite Professor Jupinder Singh to extend a vote of thanks. Professor Jupinder Singh. Professor Jupinder Singh, please extend a vote of thanks. Hello, Hanji, Professor. Hello. Professor Jupinder Singh.
think उनकी आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं मैं और Okay, sir, no problem. Okay, sir. I can wait for Okay, another sir. 2 minutes. Okay, I sir, can no wait for problem. another 2 minutes because I think Hello. if Hello. hello. Jagpal. Dr. Jagpal. Hello. Hanji, Professor. Hanji, I am Hanji, very Hanji. much, Hanji, I am very much sorry, Dr. Sahib, that I find a network problem in between. So, Dr. Parkash, first of all, thank you very much. But I have 2 questions for you. If no one is asking the question, but I have 2 questions on the issue of Indian economy. One is how India can do better. How India can do better, as you have worked very much practically, how India can do better for its poor people who are living in slums. Because if I go very much practical, these people are earning, no doubt, because they work and earn, although they do not live according to their income. What I mean to say, the migrant laborers, just a minute, the migrant laborers from Bihar and UP, majority of them, they are living in slums. Am I right? The migrants of Bihar and UP, they live in the slums of Punjab, basically. Yeah, I wouldn't say they are the majority, but yeah, they are a significant minority. Yes. Mm-hmm. Yeah, significant minority, but majority of them belong to Bihar, UP, and they can work or they have efficiency, although they are unskilled. They are illiterate, unskilled, but do a lot of labor and earn better than the income of Punjabi people. So what do you suggest to solve the problem of malnutrition, basically? I give you a very authentic example that in majority of our homes, Punjabi homes, these ladies from UP and Bihar, they work in our homes and earn a lot. Even then, their children have the problem of malnutrition, although all of them have Android phones. So basically, what do you suggest? One question is, you just answer it. After that, I ask you another question. Yeah, so I think this is a good question. I mean, it's a relevant question. And again, like, you know, I don't think that we are going to be able to reduce malnutrition to 2% or 3% in the next, 5 to 7 years. I think it's going to take a long time. And there are multiple reasons why malnutrition goes down. So one thing is that, yes, I mean, their incomes are not, their incomes are not below poverty line, so to speak. So a lot of these families may be earning, above the poverty line, as you suggest. So why does that income, your question is, why does that income not trickle down and improve the health of their children? So I think, like, there are multiple reasons for this. So one reason that has been found in the literature is that these workers, they don't have the time for the kids themselves. So if they are going to work during the day, if they're working in a koti, then they don't have the time to take care of their own children. So the children are going to Anganwadis, or they're just, like, in the neighborhood, they're being taken care of by their family, etc., by the extended family. And the disease environment is such there in the slums that they can easily get malaria, they can easily get other diseases which come with open defecation, come with lack of sanitation. So there are issues there in terms of what can be done to improve the quality of daycare that these children have access to. And improving the infrastructure of these Anganwadis is just one step, but improving the wages of the
improving the wages of these workers, of these daycare workers, the Anganwadi workers, that's the other step. So my research has found that if you do both, if you educate mothers and you pay higher to the workers, to the daycare workers, you improve the quality of these daycare centers, then all of them things together can make a dent, can make a small dent in malnutrition. We don't have a cure. We don't have a medical cure for malnutrition yet. So one question, Dr. Sahab, another question is here. Jagpal ji chat box देखियो question आया बच्चे दा कोई? हाँ sir. Sir, Amanpreet Kaur is asking, what about midday meal scheme run by government? Shouldn't there be more incentives and schemes as efforts from the government, as we are talking about work on multiple fronts? So is the question that we shouldn't have midday meal schemes, or we should have more midday meal schemes, because we already have midday meal schemes? More incentives and schemes. Jagpal, I can add a bit over here. That is, Dr. Sahab, you must elaborate the concept of niyat and niti. We have niti, but I think we do not have niyat. I think niyat hoti hai, but over time वो niyat भी मतलब corrupt हो जाती है, because when a worker is performing, when a worker is doing well, when a worker is performing for the sake of the child's health, for the sake of the country, और उसको उसका इनाम नहीं मिलता जब, तो वो over time deteriorate हो जाती है नियत, उसमें भी decay आ जाता है एक तरह से, आप समझे. तो उसके लिए ही हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स और इंसेंटिव्स जो हैं वर्कर्स के, वो ऐसे कंपैटिबल होने चाहिए कि उनके अंदर वो आए ही ना, उनके अंदर वो नियत डिके हो, ओवर टाइम डिके हो ही ना. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उनको इंसेंटिव्स प्रॉपर मिले, ताकि वो मिड डे मील्स बच्चों तक पहुंचा सकें. मैं कई सेंटर्स में जाता था जहाँ पे मिड डे मील्स पहुंचते ही नहीं थे बच्चों को. वो आता बहुत सारा मिड डे मील था, बट वो जो साथ में जो भैंसें खड़ी हैं वो मोटी हो रही थी और बच्चे malnourished थे. तो a lot of the food got wasted. It went to the neighboring cattle, and बच्चों को मिल नहीं रहा था वो खाना. और पंजाब में तो और भी ज्यादा बुरा हाल है आंगनवाड़ीज में, मतलब चंडीगढ़ से भी ज्यादा, because even though it is the food capital of the country, पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं होती. चंडीगढ़ में तो चले, फिर आंगनवाड़ीज में even in the slums पढ़ाई होती थी. पंजाब में बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं होती आंगनवाड़ीज में. उधर सिर्फ उन्होंने चेयर्स लगा दी हैं बच्चों के लिए प्लास्टिक की, और बच्चे प्लास्टिक की चेयर्स पे बैठते हैं सारा दिन, और जो आते हैं आंगनवाड़ीज आते ही नहीं कई बार तो. और वर्कर्स भी बहुत, अटेंडेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्कर्स की पंजाब में, आपको पता ही होगा. और इसके ऊपर कोई वोट, बिकॉज दिस इज नॉट अ वोटेबल पॉलिसी, इसके ऊपर लोग वोट नहीं करते कि आंगनवाड़ी की क्वालिटी कैसी है. लोग वोट करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, लोग वोट करते हैं फ्री पैसा उनको मिल रहा है कि नहीं, उनको दारू मिल रही है कि नहीं 2 दिन पहले इलेक्शन से. सो इस करके इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल एक्शन होता ही नहीं है, बिकॉज पीपल आर, देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द पॉलिटिशियंस टू एक्ट टू रिड्यूस वेस्ट of midday meals, to improve the hygiene and sanitation and mental development of children who are going to be the future leaders of India. So these are children. अगर आप 5 साल तक किसी बच्चे में उनको कुछ समझाते नहीं हैं, उनको ABCD भी तक भी नहीं आती, वो 7 ईयर में जा रहे हैं, तो वो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फ्यूचर में जाके आपकी कंट्री के लिए पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट बनेंगे कि नेगेटिव इन्वेस्टमेंट बनेंगे. तो ये तो अब आगे की आपने 20 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी थी वो इन्हीं 5 सालों में करनी थी, और वो मौका हमने छोड़ दिया, एक तरह से छूट गया हमसे वो मौका. The bus has gone across. We had put in so much money. We put in so much money in these programs. I mean, नीति आप कहते हैं, नीति के पीछे पैसा भी बहुत लगता है. हर नीति के पीछे करोड़ों रुपए लगते हैं, बट वो कहाँ जाता है करोड़ों रुपए? Where does it go? Like, I mean, if you were to like really get down to the grassroots details, वो सारा पैसा कहाँ पे, वो जो food contractors हैं वो बीच में वो भी खाते हैं,
क्वालिटी जो फूड की है वो नहीं ठीक होती, इन खाने में जो आयरन होना चाहिए, जो बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। बच्चों को सिर्फ चिप्स के पैकेट एंड ऑफ द डे उनके पेरेंट्स आके उनको एक चिप्स का पैकेट ले देते हैं कि आप ये लेके खुश हो जाएं, उससे तो उनका कोई वो विकास नहीं हो सकता। So just last one question, because I know that you are missing your sleep over there. सोने का समय है, लेकिन हम आपका बहुत टाइम ले रहे हैं. Just one more thing. Of course. मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, are you getting my audio? Yes, of course. Just 1 minute. Yeah. अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि in India we have 5-year plans in which we are providing free food to our poor people. We are providing free medical facility in villages and even in cities in the form of government dispensaries. Number 2. Number 3, we are providing food or ration food in the form of PDS, public distribution system. We are providing free education to our people. We are providing emergency facility in the form of ambulances. Then why our policies are lagging behind? Why we are not getting 100% result? We are doing better than many of the countries which are which are very much developed. We are spending more money. What is the reason behind it? One reason what do you see in your studies? Could you again maybe repeat the last part of the question? Sorry, I didn't get the last part of the question. The thing is that we are spending a lot of money on these policies: midday meal, medical facilities to poor, the facilities of sewerage system and others, sanitation, this, that, for poor people basically. Then why we are not getting the results? See, इसमें दो चीजें हैं. एक तो ये है कि रिजल्ट आप क्या कोई मॉनिटर भी कर रहा है रिजल्ट को, like who is the person who's monitoring the impact of all of these policies? Like हो सकता है उसका असर अभी ना पड़े, थोड़े टाइम बाद पड़े, और वो आपको but unless you are monitoring it at regular intervals, you will not know the effect. That's sort of one aspect to it. The second aspect is that a lot of these things are substituting away from private investment. So जो पहले लोग अपने आप पैसा दे के जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, वो अब गवर्नमेंट अगर उनके लिए पे कर रही है तो वो एक तरह से क्राउडिंग आउट हो रही है पर्सनल इन्वेस्टमेंट की. So there is that crowding out effect that's happening as well. And the third thing here is that ultimately there is an age dimension to all of this, right? So if you act early, जो अगर आप पहले एक्ट करें, बच्चों के अंदर डीवर्मिंग अगर आप दें तो उसका असर डिफरेंट है देन अगर आप किसी एडल्ट को देते हैं. वो तो उसका भी असर है कि आप किस एज प्रोफाइल के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अगर आप एडल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं तो उसका असर इतना नहीं पड़ता कंट्री के ग्रोथ पे जितना लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे असर पड़ेगा अगर आप बच्चों पे फोकस करेंगे या मदर्स यंग मदर्स पे करेंगे. So इसका भी असर होता है. इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई असर नहीं पड़ा. A lot of studies in development economics have shown the impact of providing iron supplementation to pregnant women. A lot of studies have shown the effect of providing iodine supplementation and small nudges for vaccination. For example, vaccination का बहुत असर पड़ा है. इंडिया में iodine supplementation is almost 100% take up है. जो पहले लोगों में डायरिया जब होता था बच्चे को, तो in the year I think 2004-2005, 6 out of 10 mothers would reduce the water intake in their children if their child has diarrhea. तो अब वो बहुत कम है. मदर्स में ये काफी ज्यादा नॉलेज है कि अब डायरिया के टाइम ऐसे नहीं करना चाहिए. डायरिया के टाइम एक्चुअली we should increase the water intake, not reduce the water intake. So there are many other things that have improved in the country, and so if you look at sort of the knowledge of the health knowledge of the common man, that has improved. जो पहले sanitation इंडिया में थी उससे अब improvement है sanitation की अगर आप देखेंगे over time. But sometimes we as individuals expect too much to happen in too short a period of time. So वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हम
किससे हम बेंचमार्क कर रहे हैं. हम इंडिया के अगर पहले देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे इम्प्रूवमेंट ही ज्यादा रेट पे हो रहा है. बट आवर एक्सपेक्टेशंस आर मच हायर. हम देखते हैं कनाडा में कैसी रोड्स हैं, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कैसा है. उस हिसाब तक पहुंचने में हमें और 50-60 साल लग सकते हैं. बट द थिंग इज कि हमें अभी की इंडिया में अगर जो हमें मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स करनी है, हमें जो हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, वो तभी आ सकती है जब हम यंग पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, यंग हेल्थ पे, और एजुकेशन पे फोकस करें. तो आई थिंक वो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है इंडिया का फ्यूचर में. बिकॉज इफ इंडिया इज 1.2 बिलियन पीपल, that is India is going to be the largest country in the world by sheer population. It is going to overtake China in a few years. So are we going to create a situation where the demographic pays a dividend to us, or where the demographic pays a tax? So we should not end up in a situation where we are having to take care of these people, the 1 billion people. Rather, we should make those 1 billion people empowered through education, through better opportunity. And I think, I don't want to get into politics right now, but there are a lot of other social issues as well. And we are already living through, the biggest natural, I would say, pandemic, jisko aap kahenge, the biggest man-made or natural, it's kind of both. But that kind of pandemic, no one has lived through this in their lifetime yet. So there is already like kind of that stress on the country, where the country recession is, GDP is declining at 7.5% a year. So we are already like very stretched at the margins, and this is showing up in the riots that are happening in the country. Because of high unemployment, as you mentioned. So अभी हमारे काफी सारे जो मुद्दे हैं वो conflate हो रहे हैं because of the pandemic itself. But I think like with grassroots work, I mean, ultimately that grassroots work is needed, and to show the government the mirror, we as researchers and as people who are going to college, who are going to graduate out of college, who are going to get PhDs, who are going to get masters, we are going to have to show the government that mirror and tell them that that this is not working right. And if we don't do it, then no one will. The government will not do it, because for them there is nothing at stake. So I mean, thank you very much, sir, for your elaborated views on the topic of social economic conditions worldwide. So on the behalf of my director principal, Dr. Kashmir Singh, our head of department, Madam Navjeet Kaur, Dr. Jagpal, Professor Simran, Dr. Simran, and Madam Pavan, myself, Jupender Singh, on the behalf of all of us and my students, I am very grateful to you for sparing your valuable time, as well as sharing your practical views on the topic of social economic conditions worldwide. So thank you very much, sir, for sparing your this valuable time and sharing your views. Thank you very much, sir, and good night. Thank you. Good night. It's an honor. Thank you.